So today's topic, I think Preet ji has attended, Parnit ji has attended. So Rasmi ji आपके लिए नया है. Okay, sir. So this is all about uh, four individuals, four special people who worked for yoga. So decline of this dharma and yoga, that all happened in Kali Yuga more. So still these people tried their best in the British rule, in the Mughal rules and all. Still they try to save our knowledge, our culture, and this all, which was some people try to vanish it intentionally because this was the powerful knowledge. And it was when British people are there, they removed our Guru Shishya Parampara because we'll learn their education system and automatically will work for them. And every time it will be British India and never we can come out of that. So in that way, that was a, like you can say, they have worked, they have breaked our education system one. Next, back to Veda. So these slogans and all happened a lot because whatever education system they have implemented in India, this all are making us educated level. So for that, he told ki we have to in our knowledge, we have to with our roots, we have to connect, and our knowledge is the ancient one. In that way, so what Vivekananda has done that he traveled Chicago where he introduced this Raj Yoga. Okay, and whole life he promoted this Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. So he emphasized more on youth. Okay, Sir, women's. I've read that reflections of Vivekananda a little bit. तो Okay, उसमें मैंने इनके बारे में पढ़ा है. okay. Okay, बहुत बढ़िया. Do you want to add something? क्योंकि for rest of three, if you can add some new thing, it will be great. मेरे पास भी है वो बुक है, उत्तिष्ठ जागृता बुक. So even I'm fan of him from childhood only. Like मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका. Schools में अगर if they are giving debate competitions something, मेरा favorite topic था स्वामी विवेकानंद. Even I'll involve to Jan 12th, his birthday, the National Youth Day, Yes, sir. Viveka Run, these all events I'll participate because मुझे उनका आइडियोलॉजी बहुत अच्छा लगा, वेरी प्रैक्टिकल एंड अच्छा. हाँ, आपको क्या पता है थोड़ा बहुत बोलिए. मेरे प्रीत जी परनीत जी को भी पूछते हैं इफ दे नो समथिंग एंड इफ दे कैन ऐड समथिंग टू दिस. ओके, Sir, रश्मि जी इंग्लिश में बोलिए क्योंकि शायद प्रीत जी को थोड़ा हिंदी दिक्कत हो सकता है ना. okay. Sir, that one thing which I liked according to Vivekananda ji, that divinity is present in everyone, and the ultimate goal is to realize that divinity. And he said that ki personal God is, he was not in the favor of personal God. Yes, he wanted universal truth. That for him God was universal truth, and for him it is like ki all the religions ultimately lead to the same goal. That is Yes, that is the God is inside everyone, and we need to realize them under him. yes. Yes. And ma'am, I went to some seminar, so there was a bookstall. So as I told, out of which first Vivekananda book will attract me more. So I have brought here that popular one, Erase and Aware. So from there, what I understood is, he told that youth is actually the backbone of the country. So youth should give the service to humanity. And Yes. when individually we are good, when like in Hindi I can tell, प्लीज जी थोड़ा कोशिश कीजिए. I know tough. Totally Vyakti fine. Nirman. Yeah. What is Vyakti Nirman is if I am with a well character, if I am knowledgeable, if I am good, then I'll take care of my family. I can educate my children, my society well. If we all are creating a good team of members who are intellects, good people, service-oriented people, Seva Manbhav, then from Vyakti Nirman we can do Samaja Nirman. Samaja Sir, is a society around us. And if good Samaja is Nirman, that will some way this multiple Samajas constitutes a Rashtra, a country. So the country will be good. And our youth is the backbone because they have the highest energy. They are the people who can do hard work. They are the people who can do service. So, for example, now my father, he has a service attitude, but he cannot work because he is aged. So what he can do? Again, he is dependent on me. So like that in country also, youth is the person
who have to be in the spiritual first, next service attitude, and when they are working for the society, society nirmana is done, building of a good society, that will take you to nation building, Rashtra Nirman. So in that way, he told more about stick to our cultures, stick to our Vedas. And in America, his first line also, the popular line, Sister and brother, brothers of America, he said. yeah, my brother and sisters of America. And And he's in that, also said कि जैसे जो कुएं का मेंढक होता है ना, mm, mm, तो फिर नॉलेज के लिए उन्होंने इस वर्ड का यूज किया था. yeah. यस सर. एंड अपलिफ्टमेंट के लिए ही रियली वर्क कि जो आपने यूथ का बोला, ही सेड वंस कि इफ यू आर लिविंग फॉर योरसेल्फ इट मींस यू आर नॉट अलाइव. So if you are living for others, मतलब if you have knowledge, spread it, uplift, work for the upliftment of the poor, poverty, Mhm, education, mhm. it means you are alive then. Mm. And I believe in my sixth standard or seventh standard, one Arya Samaj topic was there, one single topic. For sixth standard, it's big one. But there I heard about this Dayananda Saraswati and all. So he worked for women and children. He fought for our Veda knowledges. So people should know that our cultures and traditions, because it's a very pure knowledge, nature aligned knowledge, and directly Daiva Utpatti, God's knowledge. So in that way, he worked for that. This one, equanimity in the society. Uh, he believed that when we are educated, when we are we are in the knowledge, automatically we are asset to the society. If we are in a knowledgeable, along with that spiritual, because see, if a person is knowledgeable and he is in nature wise he is not good, so that is also not asset. So for him, he told we need education along with the knowledge of Vedas, Karma Kandas, okay, Yajna and all. And he worked for women rights more. Like previously, in 1800, after that, like I believe he born in Gujarat and all. So that time he worked for women rights in India. For poor children, he created Arya Samaja, where educating them, and mainly this normal education is there, but mainly Vedas, yoga, more on the culture, more on the karma kandas, more on the nation building skills. That all that he done. And for women rights, he fought like anything. And the people who are from like this caste discrimination, colonialism, that all is there. So he worked for that. When you are in knowledge, when you are in a good spirit, in a good thing, so this caste cannot dominate you. So automatically what happened? You'll be asset for the society. So in any society you are living, due to knowledge, you can serve for the society. So that is one. Even now, one of my neighbor is there. Like we are good friends from three generations. I'm the third generation now. So they follow more like Aurobindo. You know, in near Tamil Nadu, there's a place called, what is the Union Territory, ma'am? Anyone can tell? बहुत अच्छा नाम था. तमिलनाडु के पास जो यूनियन टेरिटरी उसका नाम क्या है? Andaman and Nicobar. No, no, ma'am, not that. Pondicherry? Pondicherry, correct. So even I went to that place. I went to Auroville also. So he was actually a freedom fighter. And how Vivekananda is from Kolkata, he is also from Kolkata, like Calcutta based West Bengal. He fought for the freedom. He was a freedom fighter, worked for the rights and all. And over a time, when that all passed, maybe he want to bring that spirituality, because see, India got independence in 1947, but somehow our knowledge and cultures, that gaps are there, which we have to again bring back. So in that way, he introduced integrated yoga, and what he believed is only like physical well-being is not the correct yoga. You should be physically well-being. Then he told holistic well-being. So who would be educated, who would be Vignan Mekosa, means decision-making faculty will be active, buddhi, intellect. He believed in mentally well-being. So when you are mentally up and all right, your thought process are positive, then you are asset to think. And he believed in overall well-being. Like that same again. See, freedom fighter means his thinking will be for the Rashtra Nirman. So he thought also will be there. And Ramana Maharshi. Ramana Maharshi,
uh, he got his all knowledge by at the age of 16 only. So I can say they are Karana Janmis. Why Karana Janmis means previous Janma he is in the yogic way. Maybe he has not achieved that due to some Papa Karma or something. The next Janma he got the Ramana Maharshi Janma in Tamil Nadu's Arunachalam, I think, Arunachalam Hill or something. So at the age of 16 only he self-realized everything. Like how in India team now, Vaibhav Suryavanshi starting at the age of 15 only, he has already contributed 700 plus some in recent IPL. So these people are Karanajan. And even Vaibhav Suryavansh's younger brother, he's already not even 10 years, already he hit a century in the local match. So India is ready with the new player. So it's not they're doing in this Janma. The Punya Karma from previous Janmas, some ways they didn't achieve and they achieved this one. So Ramana Maharshi's one principle, what I believe is self-realization, more like silence, more looking into yourself. So pratyahara, when it will happen, when you are doing satkarma, when you are doing asana, when you are doing pranayama, then you are coming to pratyahara. And when you are pratyahara means when you are withdrawing senses, definitely you have to follow or work on a lot of aspects. Then only you can look into yourself. So if at the age of 16 only he realized self-realization, he understand what is moksha and all, where we are planning to get a college seat. At the age of 16, we are planning, अरे कैसे science का एक seat मिल जाए. Like it's very difficult in my place to get a science seat. So we have to appear for entrance, lot of competition in the district, in government college where fees is very less. So they're getting a seat, we have to compete. Top 255 people of the district only will get the science seat. Arts and commerce we can get, but science was the very demanded that time. So at the age of 15, 16, we are very much busy with our materialistic and career. And he realized the same thing that even I don't know if now only we are strictly practicing how many years it's required for us to realize self. I don't know. So he has realized that at the age of 16 itself. And if at the age of 16 he realized, then from which age he is already reading Vedas and all you can see. So that all family samskara and purva janma samskara. Otherwise it's quite difficult for so many people, right? हाँ परनीत जी, परनीत जी आपको कुछ पूछूंगा मैं. आप बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत नॉलेजेबल हो, सिंसियर भी हो. ऑफिस में बैठे हैं क्या? ओके, कैन यू अनम्यूट? अगर ऑफिस में बैठे हैं थोड़ा बात कर सकते हैं परनीत जी? सीज इन ऑफिस में भी सब मीटिंग्स ओ अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं. नो वरीज. ओके, रश्मि जी ये पता है क्या, अगर बुक्स पढ़े हैं विवेकानंद जी का चाइल्डहुड नेम? सर नरेंद्र नाथ दत्त. नरेंद्र का, बहुत बढ़िया. ओके, नरेंद्र जी है ना, बहुत बढ़िया. उनका गुरु का नाम? सर वो परमहंस जी, वो रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण. सो उनके बारे में मुझे बहुत कम पता था, बट उनकी वाइफ साध्वी, उनका नाम क्या था मैं? सर मुझे याद नहीं है, काफी पहले, मतलब आई थिंक मैंने एक ही बुक स्पिरिचुअल पढ़ी है, तो विवेकानंद की पढ़ी है. लेकिन मैं ये बोलूं, विवेकानंद जी का फैन था, बट एज माय हेडमास्टर इज ए योगा गुरु, सो ही यूज्ड टू टेल दिस स्टोरीज इन बिटवीन आवर लेक्चर्स इटसेल्फ. क्यों? तो गवर्नमेंट स्कूल्स में विल हार्डली हैव टीचर्स. जो जब पढ़े जैसे करे, नो वन इज देयर टू ऑडिट एंड ऑल. सो एज ही इज नॉलेजेबल, will bring lot of the spiritual knowledge to us, and I think that is a good age for us also. मतलब वो motivation and affection आज भी है, even if he is not there, still we miss him. So like he told more about Vivekananda ji, Paramahans, more about Ramayana, this 84 lakh जोनी जन्मा, like हाँ उसका क्या birth है. And that time it was like I studied in a very rural village and all, no, not much technology, nothing and all. But these all knowledge I got like anything. Like बहुत जगह में ज्वाइन किया and बहुत चीजें मिला. कभी इस्कन वाले आते तो जाकर बैठ जाता था भागवत चित्र में. So he told how Swami Vivekananda was running in a banana tree, का जो खेती था, searching for God. So in the childhood, he's searching for God in a banana garden.
completely curious. In the childhood, he used to do meditations under banana trees and all. And आई थिंक सर ब्रह्म समाज का भी उन्होंने मतलब बिफोर रामचंद्र परमहंस उन्होंने ब्रह्म समाज को फॉलो करते थे. yes, so Brahma Samaj ka, Arya Samaj ka, then after that, some people like Syam Prasad Mukherjee, they have worked more for the this one spirituality, more for our cultures and all. बाद में राजनीति वगैरह में आ गए तो दे भी वो भी हट गए. बट सब में विवेकानंद जी का और रामकृष्ण परमहंस जी का ही रियली मेट हर माता काली माता उनको मिले थे. तो हाँ, उनका वाइफ का नाम आई थिंक साध्वी सारला जी, आई थिंक. सर आई डोंट परमहंस रिमेम्बर वाइफ्स नेम, बट ये एस एस में स्टार्ट होता है पक्का. सर आई हैव सारला. बुक, इफ यू वांट आई कैन सर्च. हाँ हाँ, नो नो डेफिनेटली. यू, अगर आप उसमें इतने पढ़े हैं, यू हैव रिसर्च की पॉइंट्स, यू नोट इट एंड शेयर. इट विल बी एड ऑन फॉर प्रीत जी, परनीत जी, मेरे लिए. और आज इंटरनेट एज है, यू कैन गेट एवरीथिंग. सारला देवी, मुझे जितना मन कर रहा है सारला देवी जी उनका नाम. शारदा या सारला, शारदा देवी, सारला देवी, ऐसे कुछ. ओके, उनके बारे में है. ऐसे चित्तूर के रानी थे चिन्नम्मा, उनका बारे में बहुत कुछ सुना था मैं. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सो वी हर्ड अबाउट. और सविते फुले फ्रॉम महाराष्ट्र, सी सी वर्कड फॉर द स्पिरिचुअलिटी टेम्पल्स, ये सब के बारे में वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी उन्होंने वर्क किया महाराष्ट्र में. बहुत. हाँ, यस, महाराष्ट्र में बहुत काम बस किया था. टीचर, आई थिंक फीमेल टीचर शी वाज. हाँ, टेम्पल्स का रिफॉर्म करना, वो सब. और ऐसे ऐसे बहुत पीपल हैं जो वर्क किए. अगर आज मॉडर्न टाइम में, अगर व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, रामदेव बाबा जी जब योगा पूरा घट गया था, वो नौली क्रिया करना, ये वो करना, सो दैट है. मेरा चाइल्डहुड में वो सब मुझे देख के टीवी में बहुत मजा आ रहा था. क्यों? अरे ऐसे भी कर सकते कि एक योगा बोल के एक चीज है. टुडे योगा इज मोर पॉपुलर इन इंडिया बिकॉज गवर्नमेंट इज पुशिंग, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देयर. बट पहले मैं बोल रहा हूँ 2014 का पहले भी ना, रामदेव बाबा एंड ऑल दे वर्क. आर्ट ऑफ लिविंग रिसेंटली कंप्लीटेड देयर 50 years. Okay, so they have created some dhyan mantra and all. जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाज itself was not there, they worked actually organized way. बट हाँ, फीस थोड़ा ज्यादा था, आई एग्री. बट सर बट बट आई एम हैप्पी टू पेड दैट ऑल फीस. क्यों मालूम है? वो फीस अगर वहां नहीं पे करता, पार्टी करना पड़ता, टूर जाना पड़ता दोस्तों के साथ. सो आई स्पेंड दैट मनी ऑन दिस कोर्सेस. तो मुझे बहुत अच्छा बट लगा. बाबा रामदेव ने ना, ही ब्रॉट योगा फॉर एवरीवन, फॉर इवन बिकॉज हाँ आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो ही यूज्ड टू हैव वो एक ऐसे उनका प्रोग्राम होता है, यू गेट हाँ, टिकट्स, यू कैन अटेंड, यू कैन हैव योगा विद हिम. तो इस तरह का प्रोग्राम ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इन ऑल द स्टेट्स. yes. एंड इफ यू सी गायत्री परिवार, उनका गुरु जी का नाम है, मतलब जो मैं भी दीक्षा लिया था. एट द स्कूल एज ओनली आई हैव टेकन द दीक्षा एंड एवरीथिंग डन. राम प्रसाद शर्मा जी. हाँ, बाकी लोग ना वुमेन को सप्रेस करने के लिए बोल दिए थे. वुमेन कैन नॉट चैंट गायत्री मंत्र, वुमेन कैन नॉट डू दिस, वुमेन कैन नॉट डू दिस. वो सब चीजों को हटाए. एंड नाउ वुमेन डिवोटी आर मोर एट हरिद्वार फॉर नाउ गायत्री परिवार. उसको लोग बोलते हैं शांति कुंज, शांति कुंज. सो नाउ वुमेन डिवोटी आर मोर. सो क्यों? वो जो गैप करके उनको सप्रेस करके घर से बाहर नहीं निकल के विदाउट एजुकेशन जो सप्रेस कर दिए थे, सो ही वर्क फॉर दिस. और वेस्टर्न में एक इंट्रोड्यूस किए थे, उनका नाम क्या है, सिख संप्रदाय से एक गुरु थे, प्रीत जी और परनी जी, आप लोग बोल पाएंगे, राम भजन जी और समथिंग. who introduced Kundalini yoga in 1960s in this one. He's from Punjab. गुरु ग्रंथ साहिब का प्रचारक भी थे. एक गुरुद्वारा में सेवा करना, सब वो लोग बहुत इंट्रोड्यूस करके पूछ किए थे. एंड वो लोग अन्नदान को बहुत बड़ा काम सोचे थे. एंड वो मतलब बहुत गुरुद्वारा सेवा वगैरह मेरे दोस्त हैं, जितना जो हो जाके देते. तो इन दैट वे दैट इज गुड. जैनिज्म, जैन गुरु जी महावीर जैन, उन्होंने जैनिज्म में ही इंट्रोड्यूस अहिंसा. तो हाँ, अहिंसा मतलब क्या है? नॉन वायलेंस. प्रीत जी, यू नो इन जैनिज्म
They'll not even have food that is grown under the ground, who are proper Jainis, right? Uh, if sunlight is not on that fruit or any veggies and all, for them they'll say it is uh, not a not a acceptable food for them. So Jainism went to that discipline. Maybe nowadays it's again Kali Yuga, people are not following, but still so many Jainism people are there, and back end they believe in vegetarianism. They worked more on veganism, okay, more on plant-based food, and they promoted the society upliftment and all. And Jainism has some other, like you can say, subset of Hinduism only, Sanatan. But I can say when no one is following, जब स्पिरिचुअलिटी पूरा हट गया था, धर्म का डिक्लाइन हो गया था, सिखिज्म बहुत डिसिप्लिन था, आपका जैनिज्म बहुत डिसिप्लिनली काम किया, एंड लीडर्स इन हिंदुइज्म एंड सनातन वर्कड, एंड उसके हिसाब से कुछ कुछ बचा, बट नाउ अगेन इट इज डिक्लाइनिंग. तो इसमें आर्ट ऑफ लिविंग का श्री श्री रविशंकर जी इज वर्किंग, ईसा फाउंडेशन जगू वसुदेव जी, ही इज वर्किंग ऑन क्रिया योग एंड ऑन. हरिद्वार में रामदेव बाबा जी, गायत्री परिवार इज वर्किंग ऑन योगा एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, एंड एंड सिखिज्म में मैं इनका नाम बहुत ज्यादा सुना हूँ, राम I भजन. think his name was Harbhajan Singh Yogi. Okay. So, Harbhajan Singh in Yogi. 1960s, he introduced Kundalini Yoga. Yes, yes. Yogi Bhajan, they used to call him. Yogi But Bhajan ji. Harbhajan Singh. हाँ जी, योगी भजन जी. Yeah. So, short name मुझे जितना याद है मैम, योगी भोजन जी. तो some में this all people tried in some में to work. Then your T Krishnamacharya, बीके आयंगर जी. बीके आयंगर जी का देखें, ओ उनका शिष्य पटाभी जॉयस. वाओ, मैं उनका सेशन किया, मेरा बोन टूट गया. एक अर्जुन नमस्कार, आपको पता है, 2 रस्सी लेके उल्टा लटका दिया मुझे. तो so literally you can say in 3 days workshop, only in 3 days, मुझे ऐसे लग रहा था बॉडी का सर्विसिंग होके मैं निकला हूँ. ईच पर्सन पुश टू बहुत अदर लेवल. एक्टिव फॉर्म है उनका योगा का ना, अयंगर योगा का. इट्स अ वेरी एक्टिव फॉर्म. एक्टिव फॉर्म, एंड they'll use all the props मैम, bricks, हाँ, bricks, belts, okay. There is a separate chair. How they asked me to, आयरन वाला चेयर. यस यस. नीचे पकड़ के बैठने के लिए बोले, मेरा पूरा बॉडी को घुमा के पूरा नीचे से डाल दिया, मतलब पूरा राउंड सर्किल हो गया. सो पहले मैं डर गया कि आई कैन नॉट डू, बट आई डोंट नो, द ट्रेनर इज सो एक्सपर्ट. वो आयरन जो चेयर है उसके ऊपर एक पिलो लगा दिए, बिकॉज मेरा एब्डोमेन पेन ना हो. तो उसको रखने के बाद बोले लेग, चेयर का लेग्स को पकड़ो, पकड़ने के बाद ना टांग को ऊपर उठा के पूरा नीचे से घुमा दिए. सो आफ्टर दैट, वाओ, इट्स वर्किंग फॉर मी. तो मैं सोचा थोड़ा बेली फैट है, सो इट विल नॉट हैपन, और मैं इतना एडवांस नहीं किया. वो हुआ अर्जुन नमस्कार, आई थॉट आई कैन नॉट डू. बाय जंपिंग यू हैव टू डू सूर्य नमस्कार, मतलब ऐसे ऐसे जंप करके विन्यास योग में जैसे करते, दैट ऑल. सो आफ्टर दैट सेशन, इट्स आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर, आई जॉइंड दैट 3 days वर्कशॉप. नाउ आई से बीके अयंगर जी का मैं भी बिग फैन हूँ. इफ आई गेट ए चांस अगेन, आई वांट टू गो, क्यों, next level, whatever have they done next. Now on Vilva yoga is coming in Pune, Bangalore, and Mumbai areas and all. Wow, what a beautiful, that ring, you know, ring, complete body will they'll fold with that and all. So wheel yoga mein, aerial yoga mein, they are very good, those people are very good. And what I like from Vilva yoga, you know, who is not able to do in their course, they'll completely successfully they'll do, and they'll complete the course. So they know how to go to that position. Suppose go mukhasana. Now suppose I'm not able to touch, or I'm trying, they'll give some exercises, belt and all. The time you are coming out, it will happen. You'll completely hold like this, and both side it will happen. And like that, so many advanced asanas there, Mayurasana and all. Holding, like in standing, you have to go back and you have to hold your ankles. So what generally we used to see in circus, you know, circus, that all things they'll make us to do. And in that way, next level is gymnastic, but gymnastic not, I'm saying, but brick yoga, chair yoga and all, they're doing like excellent. So I'll say now
in urban people are started accepting yoga in India. Why? They have a lifestyle issues are there. They're in offices, they're in difficult lifestyle and all. So now they are getting the interest of this thing. And after that, 2018, when Ministry of Ayush has created this certification and all part, like I think first yoga day when ma'am, this recent one went is 12th one. So 12 years back, 2014, I believe, first yoga, International Yoga Day was proposed and accepted by UN and internationally. So after 4 years, like 14, by 18, Ministry of Ayush created this yoga certification board and they worked for the ancient knowledge. And the syllabus was not designed normally. It's designed by yoga gurus, some universities, some Sanskrit universities involved, some medical doctors, Ayurveda doctors involved. And the syllabus they designed. If you're passing this all path, if you are done a yoga master, in therapy also there are 3 levels. If you're doing, then you are not less than a doctor. If you are completing up to that with a proper way, with a proper field experience, if you are teaching every day, then it's equivalent to a doctor. So these all people somewhere promoted yoga. So I'll go one by one. देखते हैं कि whatever in your syllabus, that first we'll look into. So first one, let me go to that document. Let's see. Sketches. So in your syllabus, first one is Ramana Maharshi ji. Okay, please carefully look because if you see that data, you can recall in the MCQs. Okay, मेरा screen देखते रहिए and meantime you can listen to my words. First है Ramana Maharshi ji, born in 1879 in Tamil Nadu. So he experienced this self-realization. Just now we are talking, right? At the age of 16 only, he realized. He lived at a hill called Arunachala in Tiruvannamalai of Tamil Nadu. So he's one of the deep wisdom concept. He's known for silence. When you are in silence, your mind is calm. When your mind is in pure state, then only Drashta can realize its own Sarupa. Tada Drashte Sarupe Avasthanam. So when we are in the deep wisdom, when we are in the silence, deep silences, like it's like Samadhi beyond. When we are going Samadhi and beyond, then definitely we'll realize ourselves. And that is the one thing, Atma Vichara, self-inquiry. Who am I? So mind should turn inward. We are looking into ourselves, and that is nothing but your true yoga. So mind should turn inward. Silence is the highest teaching. Okay? When you are in the deep silence, like meditation, okay, you don't need any object to meditate. Like it's not even Trataka, it's not even Dhyana. Beyond that, when you are no more, you are required an object, you are in the deep silence, then that is nothing but your yoga. And I'll tell in my whole life, somewhere I realize this state is in Vipassana 7th day onwards, because no food, like very limited food. You cannot talk to anyone. You have to go in your room and you have to stay. By 4:30, your session will start. By 9:30 in the evening, it will complete. In between, you'll get breaks. You cannot look to your nearest participant. You have to follow only the bells. According to bells, you have to follow. And no mobiles allowed, no your personal food is allowed, and also you cannot talk to anyone. Only if your guru will ask you for some doubt, he'll allow you some time. So when your teacher or guru will allow you, that time only you can speak in whole 10 days. And the last day, once they'll complete your Arya Mouna. Arya is the noble silence from that. So what is that noble silence meaning is? If I'm using WhatsApp, Facebook, I'm doing chatting and not talking, that is not noble silence. So nowadays people are doing fasting, but they're thinking everything. So that is not proper fasting. I can remember my grandmother and all. When they'll do fasting, right? They'll not watch anything like modern things. Like in that time, TV is a big thing. They'll not watch TVs. They'll not look for any entertainment programs. They'll keep a book, spiritual books and all, they'll read in between, but not for any outside noise and all. Intentionally, they'll read by their own.
They'll not talk more. Even they'll not, like you can say, sleeping also, it's not like more. And they'll not create impression, means they'll not talk to all family members or guests in that time. And it's be like they lead a noble life. If they're going to washroom, they'll take a bath and they'll come. Okay, like Shuddhata, Swachhata, Yama, Niyama, they'll completely follow. They'll not talk more. If the one time food what will be given, it's like a very small cup. And it will be like either salt, sugar, spices, sendha namak they may use. Okay, not sugar but jaggery. They'll use banana leaf for the food. Okay, they'll wear cotton wear, white color, because my grandma widow, but generally they'll wear that cotton one and all. They'll stay a disciplined life. Brahmi Murta they'll get up. Their bath and all will be done before sunrise itself and all. And they'll be in the spiritual process whole day. Puja, part, everything. But no sound. Mouth will be closed. They'll not go for any samskara. They'll not look in the family events and all. Everything it will be taken care by some other people. They'll be only gently they'll do. Even if any other food comes from outside, they'll not have it. Okay, anything freshly prepared for them separately in a separate pots, then only they will have. So those are samskaras. They cannot use onion, they cannot use garlic. There is no rajasic, only sattvic food. Even they cannot use oil also. Pure ghee that is prepared from our cattle only. Means it's in our हमारा गौशाला से जो गाय का दूध आएगा उसको शुद्ध तरीके से घी बना के अगर दिया जाएगा उसी को खाएंगे वही चीजों को लोग यूज करेंगे सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आर्या मोना एंड द फास्टिंग्स आज का फास्टिंग में क्या है मूवी देखने चले जा रहे हैं शॉपिंग करने चले जा रहे हैं बाहर घूमने चले जा रहे हैं तो खाना नहीं खाना फास्टिंग नहीं है we are not creating any samskaras for our chitta and that I realized in this Kali Yoga and that is from Vipassana I got. Art of living also I went, but there also your samskaras will create because there are a lot of process. खाना तो मिल जाएगा लंच डिनर तो मिल जाएगा फिर उसमें क्या हुआ थोड़ा मुश्किल है बट या out of 7 days 2 or 3 days they'll make us to do very little food morning and then evening only. So in that way something I realized there, but this 10 days genuinely it worked on mind. Previously I thought what is this meditation and all? What is this yoga nidra? Those are dummy thing. Initially, I thought, but when I got the results of that after some days, right? When personality changed, when I see that changes in myself, my family people told, in society people told, he, you are a new version of yourself, like that people commented. Then मुझे योग निद्रा पता चला and पहला योग निद्रा जो आर्ट ऑफ लिविंग का मैं अटेंड किया था दिल खुश हो गया yes, it is really working. Okay, excellent. Then I went to their Sudarshan Kriya. So Sudarshan Kriya also. Soham's one breathing technique. I heard ki Nimhans has recommended it for some mental patients and for the people who cannot recover by medicine or any medical therapist. For them, they told to listen Soham. Even if they cannot do, let them listen that because if you see Sare Gama Pa, these all sounds of the music syllables are activating your chakras. You know, Sare Gama Pa Ni Da. So this all, if you are using the cups, the vowel sound and all, it will heal so many people's stress. कल हम स्ट्रेस के बारे में बात किए थोड़ा स्ट्रेच भी कर लिए तो उसमें मुझे वो आंसर्स वगैरह बहुत रिसर्च करने के बाद मिला व्हाट इज एग्जैक्टली हैप्पीनेस रश्मि जी आज बताएंगे कल तो हम लोग 1 घंटा प्लस बात की सर happiness is it at this moment only. Yes. So happiness is like जो बचपन का स्टोरी था ना बेटा एक बार 10th पास हो जा तुम्हारा लाइफ सेट तो ये हम लोग पहले हमें सुनाते थे बेटा तू कुछ भी कर ले मतलब टू मेक अस इंस्पायर वो लोग क्या बोल रहे थे बेटा एक बार 10th पास हो गया ना मेट्रिकुलेशन दैट टाइम दे विल से मेट्रिकुलेशन एक बार मैट्रिक निकाल लिया ना बेटा तुम्हारा लाइफ सेट हम लोग तो नहीं पढ़ पाए तुम पढ़ लो व्हेन वी विल कंप्लीट मैट्रिक बेटा मैट्रिक तो चला गया दैट इज पास्ट
अंटिल 12th का स्कोर नहीं कर पाए तो तुम लाइफ में पीछे रह जाओगे। दैट इज द एंडिंग ऑफ योर स्कूलिंग। 12वीं खत्म किया तो यू आर डन। जो 12वीं खत्म किए, बेटा 12वीं से क्या होगा, दैट इज जस्ट ये स्कूलिंग। आपको एक ग्रेजुएशन में एक ऐसे प्रोफेशनल कोर्स ले लेना है, मेडिकल, या आप एंट्रेंस प्रिपेयर करो, जो भी करो, आईआईटी करो, एम्स लगाओ, कुछ भी करो, एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ बन गए, then only you can like survive yourself. You don't need our help and our generational help. तो जब ग्रेजुएशन खत्म हो गया, देन they'll stay। बेटा ग्रेजुएशन एंड ऑल ना तुम्हारा ब्रह्मचार्य था। एक्चुअली ट्रू स्ट्रगल स्टार्ट्स नाउ। जब तक तुम्हें एक अच्छा जॉब नहीं लग जाए ना, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा, तुम्हारा शादी नहीं होगा। जब तक शादी अच्छे से नहीं होगा, यू कैन नॉट स्टार्ट योर पर्सनल लाइफ, दाम्पत्य। तो ऐसे घुसा देते हैं माइंड में, बेटा तुम्हें एक ही चीज चाहिए, जॉब। तो हम लोग भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, क्या शादी करने के लिए लास्ट 25 साल पढ़ रहा था मैं बोलने से? नो नो, इट इज नॉट। शादी, आपके साथ एक जीवन साथी मिलेगा, दोनों मिलकर और ज्यादा हैप्पी और ज्यादा रिजल्ट अचीव करोगे। सो 20 साल में दिमाग में लगा दिए कि यू हैव टू गेट ए जॉब एंड यू हैव टू अर्न मोर, क्योंकि एक अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी। लड़की को भी ऐसे बोल देते, बेटा लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, एक बार तुम अच्छा जॉब लगा दो ना बेटा, सही दामाद मिल जाएगा मुझे, तो वो एक दिखा दो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सो दे विल टेल दो स्टोरीज आफ्टर यू विल गेट मैरिड। मैं सोचा था, मतलब जो वर्ड्स लोगों का सुना, समाज का बहुत ड्रामाबाजी ना मुझे बहुत मजा लगता है। जो समाज का ये सब नौटंकी ना, मैं जब एज ए योगी देखता हूँ ना, मुझे बाहर से बहुत ड्रामा कॉमेडी लगता है। तो ऐसे बोल रहे हैं बेटी को, बेटी ये शादी वगैरह अलग है, आप जब तक माँ नहीं बनोगे ना, पूर्ण नारी नहीं हो, तो मुझे एक बार पोते का मुंह दिखा दो, सो दे विल कन्विंस यू अगेन फॉर बेबी। जो एक एक बच्चा भी हो गया, उस बेटी को फिर छोड़ नहीं रहे हैं, बेटे को भी, मतलब हस्बैंड का पेरेंट्स एंड मदर का पेरेंट्स पीछा पड़ जाएंगे। दूसरा बच्चा अगर जब तक नहीं करोगे ना, तुम्हारा लाइफ कंप्लीट नहीं है। तो एक बेटा तो हो गया, एक बेटी चाहिए, नहीं तो एक बेटी हो गया, एक बेटा चाहिए, तो उसमें आपको घुल खिला देंगे। तो अगर वो हो गया, भाई देखो, हमारा, हम तो बूढ़े हो गए, हमारा टाइम खत्म हो गया, तुम 4 लोग हो गए, अभी बेटा तुम कुछ मत करो, बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, ओके, उनको सेटल कर दो। वही तुम्हारा जीवन का अच्छा है कि हम लोग तुम्हें जो नहीं पढ़ा पाए, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम में डाल दो। ये लोग पूरा जी जान लगा के उनको पढ़ाए पढ़ाए, तो उसमें से उनको शांति दिए क्या? वो जब बच्चे जवान हो गए, ये बूढ़े बूढ़ा बूढ़ी नहीं मरे हैं, अभी भी उनको उंगली कर रहे हैं फिर। बेटा एक बार मेरा पोता का शादी देख लो ना, मुझे मोक्ष मिलने का बराबर है। तो तभी भी पीपल आर अगेन एक्सटेंडिंग देयर हैप्पीनेस की, हाँ वो पोतों का शादी होने से। तो भाई तुम मेरा 10th से पहले से पीछे पड़े हो, मेरे बच्चों का शादी तक भी तुम्हें मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो व्हाट यू वांट? तो उससे मुझे एक चीज जो मेरे स्पिरिचुअलिटी में मुझे मिला, हैप्पीनेस स्टेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप बिना कोई कंडीशन का, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। इफ आई एम रियलाइजिंग माई सेल्फ, आई एम इन माई प्रेजेंट मोमेंट एंड विदाउट एनी कंडीशन आई एम हैप्पी, देन ओनली आई एम ट्रू हैप्पी। और वो नहीं है तो कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। अगर जो कंप्लेन मोड में रहा और किसी वेटिंग मोड में रहा, वो जिंदगी भर वेटिंग करेगा, टुमारो 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 नेवर कम्स, वही चीज है। तो प्रीत जी, आपके लिए भी मैं बोलूं, कल हम लोग बहुत मजा किए सेशन में। सो दैट्स व्हाट वी हैव आस्क्ड कि हैप्पीनेस क्या है। तो रश्मि जी अपना लिस्ट बता दिए, परनीत जी अपना लिस्ट बता दिए कि मैं अपना पेरेंट्स को मिलूंगा तो ही खुशी होऊंगा। तो मैं बोला, चार लास्ट 5 साल में अब फिर एक बार हैप्पीनेस हुआ, तो अब 4 साल दुखी ही थे। तो बोले ऐसा नहीं, मैं और ज्यादा हैप्पी होऊंगा। तो बोले अभी हैप्पी हो जाओ, नो कंडीशन रिक्वायर्ड। अगर कोई कंडीशन रखेंगे, हमेशा हम दुखी रहेंगे। और एक प्रीत जी अलग स्टूडेंट थे, आज ज्वाइन नहीं किए, प्रभासनी जी, उन्होंने पूरा फिलोसॉफी झाड़ दिया। क्या फिलोसॉफी? मैं ये करूंगा तो अच्छा होगा, हस्बैंड के साथ जाऊंगा तो अच्छा होगा, अकेले रहूंगा तो आई विल बी हैप्पी। तो मैं बोला, द टाइम वी आर ब्रिंगिंग इफ एल्स कंडीशंस, देन वो इनफाइनाइट हो जाता है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो वट एवर वी आर होल्डिंग टूडे, देन ओनली विल बी हैप्पी। एंड वो चीज समझने के लिए ना बहुत साल लगे। आज आपको मैं बोलूंगा अभी तो रियलाइज नहीं हुआ, बट दैट इज द ट्रूथ। छोटे छोटे चीजों में, प्रेजेंट मोमेंट में, आज के एक्शन में आप हैप्पी हो,
देन ओनली आर यू हैप्पी। अगर आप अभी ये कोर्स कर रहे हो, मैं पूरा L1 का क्वालिफाई होने के बाद ही खुशी होऊंगा, मतलब और 3 महीना लगेगा खुश होने के लिए। सो आई विल नॉट वेट, आई विल बी हैप्पी नाउ। जब वो आएगा देखा जाएगा। सो मेरा आज का कर्म क्या है? आई लिसन टू द क्लास। मैं मेरा नोट्स बनाऊंगा, उसके लिए कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा, और एग्जाम का सिलेबस के लिए बार बार रिवाइज करूंगा। उतना मैं कर सकता हूँ, बट वो 3 महीने के बाद क्या होगा, मैं खुश होऊंगा, उसके लिए आई कैन नॉट वेट। सो दैट सेम थिंग इज सेल्फ इंक्वायरी और साइलेंस भी एक वैसा ही चीज है। वन ऑफ द I बेस्ट just want to आंसर। add something. या Um, just because again, as आपने सबके बारे में बताया, I think I took 40 years plus for me to realize that again, happiness is also a state of mind, just like anger. You know, it's an emotion, but it's your state of mind. You can control it. But like, and जैसे आपने कहा, सुमन जी, we हमारी जो happiness, we always tied to either materialistic things, लोगों के ना, family, people. It's always external, but we don't realize it's internal. It's not external. Happiness is internal state. तो वो तुम 24/7 उसमें ही रह सकते हो, as long as है ना, we choose it. But I think that took 44 years for me to realize it. That was a journey. Preeti, you are in office, make sure others are not listening our conversation. Otherwise, na, what they'll say कि can you please enroll me to this course? तो कनाडा में मैं गुरु बन जाऊंगा. Okay, so make sure you are in a single place, because this all things in office and environment, maybe they'll take in a very high thing. कि what these guys are talking and all. Okay, so silence is the best answer. And I have done my first Art of Living course in the year 2010. Okay, and I can remember my Guru Mata's name also, Seal Parekh. उनके पास मैं बहुत दिन गया. Ma'am, I want to do my basic course. I cannot wait more. She told, I cannot take in that way. I cannot arrange a course for you. Next course is coming. You have to wait till that date. So मैं बोला मेरा travel वगैरह plan है. So then she told me one line that I can remember. Suman ji, you haven't planned and come to me. Your destiny, your plan, your karma has brought you to me. So you come to do this course. Okay. So suppose next course, which was decided by our gurus and all this date, if your prarabdha is not ready, even that course also you cannot do. And if it is suppose more 15 days, 20 days, then she told, do good thinking, positive thinking, be happy and all, because that will help you to reach that course and you will successfully complete. And do not worry. If your prarabdha and positivity is there, it will come to you. The automatically will enroll, you'll finish the course automatically. After that, your travel may come and all. So if something is written in your movement, if you are really from core of heart, you are realizing, then it will happen. So the time came for the course. I don't know clearly, but I think something happened. It's got postponed. So that time I thought, ma'am, I think I missed this course, but no worries. Sometime later, if I'll come to the city, I'll do. And I was that time in Hyderabad, and I was about to exit Hyderabad. Almost I know कि by next 2-3 months we are leaving Hyderabad. So our next new city was Pune. So I know कि हम लोग पुणे चले जा रहे हैं. लेकिन मुझे वो कोर्स क्यों करना था? वो गुरु माता जी के पास ही करना था. So she was one of the excellent spiritual leader. उनका लुक में, उनका प्रेजेंस में एक पॉजिटिव वाइब्स था, और उनके पास वो कोर्स करना था. And I don't know what happened, that course postponed, but something at home we took some call and all. हमारा travel थोड़ा extend हो गया, and I joined that course and I finished that course. कोर्स खत्म होने के बाद then I traveled, and वो फर्स्ट कोर्स का इतना अच्छा मेरे पे इम्प्रेशन आ गया. इन पुणे there was a ashram called त्रिवेणी आश्रम, शासन रोड पे था. So it was one of the, तब वो एक डेवलपिंग आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम था. बेंगलुरु वाज द इंटरनेशनल आश्रम, उसका एक सब आश्रम था पुणे में. सो सिटी से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं. आई थिंक कार में एक घंटा लगा था मैक्स. मान के चलिए एक 30 किलोमीटर, 25 ऐसे ही हो, ज्यादा नहीं. तो वी वेंट देयर. पूरा एडवांस कोर्स भी मैं कर लिया. एंड
और एडवांस कोर्स करने के लिए मैं किनके साथ गया, आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु जो एयरपोर्ट से उतरे, उनके कार में बैठ के ही मैं गया। यू नो उनको मिलना ही बहुत मुश्किल है, उनको असिस्ट करना ही मुश्किल है। एंड मैं एक बंदा हूँ जो लास्ट मोमेंट में फोन करके सीट बुक किया कि प्लीज प्लीज मुझे एक एडवांस कोर्स दे दो, मेरे पास और टाइम नहीं है कि मैं और एक आइटरेशन के टाइम में और कहीं अलग जगह जाऊंगा, एंड मुझे वो करना ही है। सो बहुत कम दिन में मैं मेरा फर्स्ट एडवांस कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग का कर लिया, वो कैंपस में रेसिडेंशियल प्रोग्राम में कर लिया। वो कोर्स करने के खुद कुछ दिन के बाद वी गॉट ट्रांसफर टू बैंगलोर, एंड देन मैं बैंगलोर में जाके मेरा और एक एडवांस कोर्स बाद में किया, एंड इवन आई हैव डन माय यस डीएसएन एंड ऑल। तो उसका अर्थ क्या है? समथिंग इज रिटन फॉर यू, समथिंग इज डिसाइडेड फॉर यू, ऑटोमेटिकली इट विल कम। बट अभी का मेरा पहला चीज है, मुझे एक कार खरीदूंगा तो ही मैं हैप्पी होऊंगा, मैं घर खरीदने के बाद ही हैप्पी होऊंगा, मैं ये करने के बाद हैप्पी होऊंगा। वो पर्सन कभी भी सेल्फ रियलाइजेशन एट द एज ऑफ 16 बोल रहे हैं ना, ये हम लोग का 61 में भी नहीं होगा अगर ये थिंकिंग रहेगा। अगर इफ विल कम टू दिस माइंड, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, अभी इसी मोमेंट में मैं हैप्पी होऊंगा, व्हाट आई हैव आई शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट, देन ओनली आई विल बी हैप्पी। अगर वो चीजें मुझे समझ में आ गया, ऑटोमेटिकली मेरे में वो स्पिरिचुअल इनकारनेशन आ जाएगा। एंड वही रमना महर्षि जी के साथ हुआ था, आज का जनरेशन में वो नहीं हो रहा है। तो बच्चों का हैप्पीनेस से हमें हैप्पीनेस नहीं, मेरा हैप्पीनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, एंड आई शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट। एंड मैं मिताहारा जैसे मितव्ययता एंड सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वो जब रखूंगा, ऑटोमेटिक आई विल बी इन दैट। और आप लोग बोलोगे ये सब सर कैसे समझ में आता है? अब स्पिरिचुअलिटी में रहो, उस उन वैसे लोगों से मिलो, वैसे सेमिनार्स में रहो, ऐसे बुक्स ही पढ़ो, अगर वो सब चीजें कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिक वो क्वालिटीज ना ऑटोमेटिकली आपको सिंक हो जाएगा। ओके, तो ये बोल सकते हैं एक वो ऐसा नेटवर्क है योग का, आपका वो सब चीजों का धीरे धीरे सॉल्व करके लाइफ में आपको बैलेंस पर्सन बना देगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बट इट विल डू दैट। श्री अरविंदो, ओके, born in 1872 in Kolkata, okay, a freedom fighter turned spiritual master। तो अरविंद जी का जो पौंडीचेरी में मैं बताया, ऑरोविला, वाओ व्हाट ए फीलिंग सिटिंग इन दैट poor place where his samadhi is there, so many crowd is there, even pin drop silence, everyone are doing deep meditation and complete silence. So I went I think 2 times to Pondicherry. If I'll get a chance again I want to travel because it's now long gap, कोरोना का पहले गया था। तो I realized the power of silence and all there. And we were there for less time, but I can say that that environment, that atmosphere, people are sitting, it relaxed or something like that. And after that, if someone again silence who talks more on Raj Yoga and all, Sivanidhi and Brahma Kumaris, Om Shanti Group, awesome Raj Yoga. If you'll listen to Sivanidhi, right, half of your anger will go away. सिर्फ उनका सुनने से। यू ट्राई टू लिसन सिस्टर शिवानी सम लेक्चर्स, उनसे तो मुझे पता है, जो 10 to 2 में बहुत ज्यादा क्लास में बताता हूँ ना, उन्हीं का ज्ञान है। सो आई कंप्लीटेड माय सात्विक मूवमेंट कोर्स इन द ईयर 21 आई बिलीव, कोरोना का जस्ट फर्स्ट फेज के बाद मैंने किया था, 21-22 आई बिलीव। उस कोर्स से मुझे पता चला कि सोने का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एंड एग्जैक्टली स्लीप का डेफिनेशन क्या है। So if food is properly digested due to early dinner, if all waste is properly eliminated, and mentally you are relaxed, अगर बहुत थके हो, कुछ ऑफिस का टारगेट है, कुछ कुछ सोच रहे हो, वो सोने का मतलब कुछ नहीं है। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस व्हाइट लाइट एंड लैपटॉप एंड ऑल राइट, मेलाटोनिन जनरेट नहीं होगा, एंड दैट इज नॉट द क्वालिटी स्लीप। पूरा खाना पच जाना चाहिए, पूरा वेस्ट एलिमिनेट होना चाहिए, आपको चाहिए तो थोड़ा वॉक करने चाहिए, कलर्ड लाइटिंग होना है, ब्लू रेस टोटली नहीं गिरना है, एंड मेलाटोनिन जनरेट होगा। अगर नहीं भी होगा, थोड़ा योग निद्रा एंड थोड़ा आपका भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, चंद्र भेदना, चंद्र प्राणायाम, ओनली लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ऑटोमेटिकली इट विल कूल्स योर बॉडी एंड इट विल अलाउ टू स्लीप। और वो जो 10 to 2 या मैक्सिमम 11 to 3 हम सोएंगे मैक्स, then only your prana shakti will cleanse your mind and all, and then we'll got the true bliss। जो एक सुबह उठ के फ्रेश लगता है ना ब्रह्म मुहूर्त में, वो स्पिरिचुअलिटी वही। एंड और एक मुझे बहुत याद है, सूत्र नीति करने का नेक्स्ट डे में
सुबह अनुलोम विलोम किया था ब्राह्मी मुहूर्त में। अरे यार, इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं क्या? आई आई रियली एक्सपीरियंस दैट। जब पूरा म्यूकस निकला गया था, जल नीति कर लिए थे, सूत्र नीति पूरा कर लिए थे, थोड़ा घी का ड्रॉप्स डाला गया था, एंड उसका नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन तो थोड़ा बर्निंग था, द नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग्स योगा क्लास, स्पेशली प्राणायामा क्लास। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सट कर्मास। ओके, हठ योगा में उसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड उसके बाद ना वो सूत्र नीति, अगर अभी होगा मैं दिखा दूंगा। ओके, लिटरली अब उसको उसको पूरा नाक में पास करके मुंह के अंदर से खींच के निकालना है। और पहले दिन जहां मैं गया था, वो गुरु को बोल दिया था मैं तो नहीं कर पाऊँ, मुझे आई एम नॉट डूइंग वेल, आई एम नॉट डू, आई विल नॉट डू। मैं पूरा डर ही गया था मतलब इधर से डाल के इधर निकालना देख के मैं डर गया था। बट यू नो, मेरे बैच में पहला सक्सेस पर्सन पर्सन में ही हुआ। मेरे से ज्यादा डरे हुए थे मेरे दोस्त लोग। तो सबसे फर्स्ट जो किया था सूत्र नीति सक्सेसफुली में। सो यू दैट फॉर्मेट ऑल्सो। देखिए, वो सूत्र नीति का ऊपर वाला जेन्यू की तरह मोटा रहेगा। इसमें हम घी लगाते हैं, पहले गर्म पानी में डुबा के स्मूथ कर देते हैं। ये वाला बहुत स्टफ होगा, उसके आगे इस वेरी स्मूथ रहेगा, उसमें भी घी वगैरह अप्लाई कर देंगे। एंड देन उसको स्प्री कर करके ऐसे घुमा घुमा के यहाँ से डालेंगे। जैसे कोरोना में चेकिंग नहीं हो रहा था क्या, वही सेम वे में पूरा अंदर लेके कुछ टाइम के बाद टंग में टच होगा, बैक पार्ट में, दोनों फिंगर से लेके खींचेंगे। एंड उसके बाद जो अनुलोम विलोम का हैप्पीनेस है नेक्स्ट डे ब्राह्मी मुहूर्त का, बाप रे, मन पूरा शांत, विल बी हैप्पी फ्रॉम इंटरनली। एंड वो चीज मैं फील किया था। तो हैप्पीनेस इज व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग दैट मोमेंट एज द हैप्पीनेस मोमेंट। तो अरविंद जी एक फ्रीडम फाइटर थे, देन ही टर्न्ड स्पिरिचुअल मास्टर, एंड ही आल्सो एक्सपेक्टेड सेम थिंग। ओवरऑल एंटायरली यू आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड एक स्पिरिचुअल पर्सन बन जाओ, फिजिकली वेलबींग, मेंटली वेलबींग, इमोशनली वेलबींग। ओके, दैट ऑल आर नथिंग बट योर excellent expense. Next, evaluation of consciousness. Individual consciousness को कब करेंगे? जब प्योर माइंड रहेगा, then you can looking into yourself, तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम. And if you understand yourself, what is your nature, what you need, who you are, then you can connect with the supreme consciousness. And for that you need transformation of entire stuff, and that is nothing but when your avidya, your ignorance is removed with wisdom, then only you can achieve this state. तो आपको बहुत चीजें पढ़ना पड़ेगा, बहुत चीजों का एक्सपेंस रहना पड़ेगा, मेटेलिक्स चीज से बहुत हटना पड़ेगा, देन दिस थिंग्स विल हैपन। एंड उन्होंने भी योग का वही बोला है, इट्स नॉट हाफ एन आवर 1 आवर एस्पेक्ट। योगा इज ए वे ऑफ लिविंग, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, जिसमें आपको कैसे खा रहे हो, कैसे सोच रहे हो, कैसे आपका विचारधारा है, कैसे आप बात करते हो, कब खाते हो, कब सोते हो, क्या खाते हो, किस टाइम पे खा रहे हो, दैट ऑल आर योगा। अगर मैं खाना 4 घंटे के बाद खा रहा हूँ, 3 घंटे के बाद खा रहा हूँ, देन इट इज नॉट मोर सात्विक। अगर कुछ खाना है, जैसे फ्रैगमेंटेड राइस वगैरह है, कुछ चीजें पुराने बासी रोटी वगैरह है, ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम रहता है, उसमें घी अप्लाई करके खाने से अच्छा है। तो वो सब कुछ कुछ नेचर अलाइन चीज आपको ओवर ए टाइम पता चलेगा। बट एक खान का पद्धति, जीवन जीने का पद्धति, द वे यू आर थिंकिंग, द वे यू आर डूइंग योर एक्शंस, the way you are living dinacharya, ratricharya, rutucharya, that all comes under yoga. Okay? So it is integral yoga. Next, so divine life on earth. हम लोग अगर इस मृत्यु लोक में है, हम लोग को डिवाइन लाइफ जीना है, मतलब लोगों के लिए, अच्छे के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ, वो सब जीने के लिए हमें चाहिए। और ना, मनुष्य जन्म का एक सार्थकता है, ये शरीर से ही मोक्ष मिल सकता है, बिना शरीर का आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो वी नीड ए बॉडी। वो बॉडी हमें बहुत पुण्य के बाद मिलता है, 84 लाख के जोनियों के बाद ह्यूमन बर्थ मिलता है। तो फ्रॉम दिस बॉडी ओनली, दिस इज द मीडियम टू गेट मोक्ष। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी। ओके, नरेंद्र नाथ दत्ता जी, राइट। तो नरेंद्र एक बहुत पॉपुलर वर्ड, 1863 कोलकाता में जन्म हुए थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और उनका सबसे पॉपुलर एक जो इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे 1893 शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जहां उन्होंने बताया था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उनके थ्रू हुआ था। तो वो
उत्तुष्ट जागृत में उनका कपड़े वाला चीज भी है कि वी आर नॉट जज बाय आवर ड्रेस, वी जज बाय आवर दिस वन नॉलेज एंड क्वालिटी। कुछ रश्मि जी वो डायलॉग पता है क्या, तो जो उन्होंने बताया था एग्जैक्ट? डायलॉग नहीं पता है, मेरी बुक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मैंने थोड़ा सा उसको समराइज किया था। ओके, सो समवन आस्क्ड प्रीत जी, hey, what this Indian monk has wearing? Okay, ये क्या कुछ ड्रामाबाजी कपड़ा पहना है? No. So he answered, he, in India will not judge by dress, but by the character and the intelligence, something he told. So that guy got flogged. फिर विवेकानंद जी को बताया, someone insulted, see your Bhagavad Gita is at the down and our all books are in top. So what he answered, you know? सर सबका भार लिया हुआ है गीता ने। हाँ, it carries other all books. It is that much powerful. So सबसे भारी चीज है तो सबसे नीचे ही रहेगा। So that's what he told कि it carries every book. So it is the very powerful because it carries other all books, master of all books. ऐसे बोल के उन्होंने ऊपर रख लिया फिर। So टीचिंग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एंड राजयोग। यहाँ ज्ञान योग तो लिख दिया, लेकिन ज्ञान योग इज एक्चुअली नॉट फॉर बिगिनर्स, ज्ञान योग इज फॉर द एडवांस प्रैक्टिशनर्स। ज्ञान योग में जाना बहुत डिफिकल्ट है, सबसे इजी इज भक्ति योग। एंड कर्म योग तो आपको पता है, निष्काम कर्म करने से आप योग करो। और राजयोग आप जानते हो, जो धारणा ध्यान समाधि, वही राजयोग। और उन्होंने ये बिलीव किया, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। ओके, मानव का सेवा ही माधव का सेवा। और वो यही उत्कृष्ट जागरूकता, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट। तो यूथ को बहुत उन्होंने बोला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, अपने आप को लीडर बनाओ। यू डोंट नीड ए लीडर, आप खुद लीडर बनो और बाकी को इंस्पायर। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती। आज बात कर रहे थे हम लोग आर्य समाज का, तो आर्य समाज पूरा सोशल रिफॉर्मर, वैदिक स्कॉलर। ओके, उन्होंने बैक टू वेदास का स्लोगन दिया था। मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप से ज्यादा वो बोल रहे थे, सत्य के लिए काम करो, सोसाइटी के लिए काम करो। ओके, ट्रूथ, एजुकेशन एंड समत्व, सब जाति भेद सबको हटा के सब एक अच्छे समाज का निर्माण करें। उन्होंने एक डिसिप्लिन लाइफ, यज्ञ, कर्म कांड, मोरल लिविंग, यमा नियमा, ट्रूथ, वैदिक नॉलेज, उसके ऊपर ज्यादा बताएं। अगर आपके पास नॉलेज है, आप मोक्ष पा सकते हो। वही ज्ञान योग के बारे में ही वो। तो चारों के बारे में अगर थोड़ा पढ़ेंगे कंपेरेटिवली, रम रमणा महर्षि जी सेल्फ इंक्वायरी, अरविंद जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, इंटीग्रल योग, जब ज्ञान योग ज्यादा था रमणा महर्षि जी का। स्वामी विवेकानंद जी सब योगों के बारे में बताया था, स्पेशली राजयोग दैट इंट्रोड्यूस इन वेस्टर्न। सर्विस एंड स्ट्रेंथ, अगर हम यूथ मिलके अगर सेवा मन भाव से काम करें तभी एक बेस्ट राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। एंड दयानंद सरस्वती, बैक टू वेदास, ट्रूथ एंड रिफॉर्म, वैदिक पाथ, उसके ऊपर उन्होंने बात किया। तो थोड़ा क्वेश्चनरी देखते हैं। ओके, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, थोड़ा अच्छा लगेगा। रमना महर्षि इज नोन फॉर सेल्फ Self inquiry. सेल्फ इंक्वायरी, हु आई एम। नेक्स्ट, Ramana Maharshi attended self-realization at the age of 16 years 16. 16 years. Team. Ramana Maharshi lived mainly at तिरुवन्नामलाई, Tiruvalli. तिरुवन्नामलाई। कौन सा पहाड़ था वो? अरुणाचला। अरुणाचला। मेन टीचिंग ऑफ रमना महर्षि, Self Self-inquiry. Self सेल्फ inquiry. inquiry. इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी। ओके, श्री अरविंद इज एसोसिएटेड विथ Integral yoga. Integral yoga. इंटीग्रल योगा। ओके, ओवरऑल वेलबींग। श्री अरविंद इज ऑल्सो ए Freedom fighter. Freedom fighter. राइटर। श्री अरविंद एस्टेब्लिश्ड हिज आश्रम इन Pondicherry. Pondicherry. Pondicherry, Aurobindo. Integral yoga focuses on Total transformation. Total transformation. total transformation, overall well-being, entire being. Swami Vivekananda was a disciple of Ramakrishna. Ramakrishna Parma. Ramakrishna. Ramakrishna Paramahansa. Vivekananda spoke at Parliament of Parliament of Parliament of Religion. Religion, Chicago, US. Okay, Vivekananda emphasized strength and Strength and service. strength and Service. service. Vivekananda taught All All yogas. yogas. Four all the yogas. four yogas: Four yogas. Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Raj Yoga. Dayananda Saraswati founded Arya Samaj. आर्य समाज। Sorry, Arya सर Samaj. मैम ये थोड़ा मैं भूल गया, पता है ब्रह्म समाज का कौन मैम प्रतिष्ठा था?
सर मुझे आइडिया नहीं है। एनीवन नोस? बहुत बहुत उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट आई कैन नॉट रिकॉल नाउ, लेकिन पता है चीजें। ब्रह्म समाज का भी आई नो। ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था। ओके, दयानंद सरस्वती प्रमोटेड दयानंद सरस्वती Vedic Vedic knowledge. knowledge. Vedic knowledge. Okay, his famous slogan was Back to Vedas. back to Vedas. Dayananda Saraswati opposed, Idol worship. Idol worship. opposed तो नहीं बोल सकते, रिजेक्टेड। वो ना पाखंडगिरी में पसंद नहीं कर रहे थे। ट्रूथ काम करो, अच्छे सोसाइटी के लिए काम करो, नॉलेज लो। तो वो क्या बोल रहे थे, मूर्ति पूजा करके बाहर क्राइम करोगे, दिखावा उनका कॉन्सेप्ट में नहीं था। तो Still some उन्होंने people थोड़ा, follow Arya Samaj, na? They don't do idol worship. They do yagya and all, havan every weekend. यस, रमना महर्षि's method is Self-inquiry. self inquiry. See, Aurobindo's philosophy includes Integration of Integration Integration of of life and life yoga. and yoga. Vivekananda's message, arise and awake. Arise and and awake. common aim for all these masters, Self-realization. self-realize। अभी तो फटाफट बोल दे रहे हैं, सबसे एक एक आके जब एग्जाम में बैठ जाएंगे ना, कैमरा ऑन होगा, तब ना ये चीजें बाहर बाहर रहेंगे, तभी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ओके, और नेगेटिव टाइमर चलता है तो ना गलती हो जाता है। मैं बहुत हीरोगिरी मार रहा था, जाके जब 80 मार्क्स दिया, रिजल्ट आया तो 62। सब चीजें पता है। मैं कपाल भाती का क्वेश्चन गलत करके आया हूँ, देखिए। अगर फोर्सफुल एक्जिलेशन करके बेली को अंदर लेने को अगर मैं कपाल भाती चूज नहीं किया, मेरे से बड़ा गधा कौन होगा। और बाहर मुझे बोले कि ये सब गलत कैसे कर सकते हो तुम। हो गया तब समझ, वो इंग्लिश का वर्डिंग कुछ अलग अलग था, समझ में नहीं आया तब। और बहुत सिंपल, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब आता था, एक 5-6 मुझे बहुत अच्छे से आता है। बैचेस में मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुद गलत करके आया हूँ। तो वो नेगेटिव टाइमर, वो माहौल, अगर सर ऐसे करोगे ना, वार्निंग मैसेज आएगा, लास्ट वार्निंग। अगर 3 बार वार्निंग हुआ, इंजन बंद हो जाएगा, टेस्ट इंजन। तो सर भी नहीं हिला सकते, ऐसे ही बैठना है, सीधा बैठना है। हॉल में बैक में कोई नहीं रहना है, कोई नहीं आना है। किसी भी तरह का चीटिंग हुआ, So लाइफ theory टाइम। exam में, हाँ, so theory exam में भी ऐसे। थ्योरी एग्जाम तो बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो आपको सामने पकड़ के नहीं छोड़ेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको सामने बैठना है पूरा। जो बच्ची का मैं दिखाया ना एक वीडियो, दैट इज Yes, योर yes. प्रैक्टिकल, दैट इज योर प्रैक्टिकल एग्जाम। So the ये theory प्रैक्टिकल exam will be at some like other place, some center. नहीं नहीं, इफ यू आर चूजिंग ऑनलाइन यू हैव टू अटेंड फ्रॉम होम, Okay. यू हैव टू बी But सिंगल इन camera द will be. रूम, योर इंटरनेट कनेक्शन शुड बी गुड, एंड सर को लेफ्ट और राइट अगर 3 वार्निंग के बाद हुआ, ऑटोमेटिक आप फेल। तो हाँ, और उस टाइम में अगर कुछ भी चीज डिजिटल का कुछ अगर फील हुआ उनको कि यू आर यूजिंग समथिंग हियर एंड देयर एंड माल प्रैक्टिस, लाइफ टाइम बैन। तो लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं है। वो रूल रेगुलेशन, इंजन जब तक ओके नहीं बोलेगा यू कैन नॉट स्टार्ट। नेगेटिव टाइमर से क्या होगा, आप अटेंड करो ना करो, लास्ट में वो क्लोज हो जाएगा। तो एक डर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो व्हाई आई नॉट अटेंड ऑल 80 क्वेश्चंस। और उसमें एक स्मार्ट ट्रिक है, क्या है, जिसमें कुछ कुछ गलती हो जाता है। which one belong is not a, और नॉट अगर आप नहीं देखे ना, उल्टा हो जाएगा। ऑल दी एबव नहीं तो बोथ ए एंड बी, वो एक बहुत बड़ा दिक्कत है। और एक एक चीज में है आंसर पता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करूंगा, इनसफिशिएंट इन्फो, और वो सब ऑप्शन अगर आ गया, नॉन ऑफ द एबव, थोड़ा सोच के आंसर देना है, तो हो जाएगा वो सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप लोग का जितना इतना एमसीक्यू वगैरह चर्चा हो के एग्जाम के लिए बोलो, मैं वैसा प्रिपेयर नहीं किया, कैजुअली किया था। ओनली चीज मुझे बहुत ज्यादा कुछ हेल्प किया था चैट जीपीटी। जब मैं देखा एग्जाम पास आ रहा है, पढ़ाई ज्यादा नहीं हुआ है, चैट जीपीटी को बोला मुझे, आई वांट टू प्रिपेयर दिस, ये चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आता, थोड़ा तैयारी करवा दो। आई आस्क्ड चैट जीपीटी गिव मी 10 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस किया, जो नहीं आता फिर जाके पढ़ा, और सर फिर से मैंने भी एक आगे। दिन निकाले थे द मेन क्वेश्चंस इंटरव्यू, तो वी वर डूइंग लाइक अ इंटरव्यू ऑनलाइन विद चैट जीपीटी। यस, तो वो अगर करेंगे ना तो आपका धीरे धीरे होगा। एंड जिसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, वाइवा तो निकल जाएगा, पकड़ में आ जाएंगे एमसीक्यू। क्यों, एमसीक्यू में ना दे कैन नॉट रिकंसिडर यू, जो ऑप्शन आप चूज के वही है। अगर सपोज इट विल बी आस्क्ड हाउ मेनी पतंजलि योग सूत्रास आर देयर, अगर 196 चूज किए एंड
उसका टेस्ट इंजन में दैट इज द करेक्ट आंसर, वो चूज करेंगे तो ही सही मार्क मिलेगा। तो यू कैनॉट लाइक डू पार्सलिटी, नथिंग। वो इंजन खुद कैप्चर करेगा, आपके पोर्टल में वो आंसर आ जाएगा, वो रिजल्ट आने का 2-3 वीक्स में आपके पोर्टल में ही सर्टिफिकेट So आएगा। once we click the answer, we cannot change it. आई थिंक यू कैन मार्क फॉर रिव्यू, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब अटेंड करके चले जाना, कुछ कुछ मार्क रिव्यू रख देना, फिर जाके चेक कर लेना है। लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि बीच बीच में एक एक सेक्शन के बाद रिवाइज करना अच्छा है, क्योंकि लास्ट में मिस हो गया ना, वो टाइमर बंद तो खत्म, उस ऑटो सबमिट हो जाएगा। लेकिन लेकिन मेरे हिसाब से उतना प्रॉब्लम नहीं था। मेरा 80 क्वेश्चंस को आई थिंक 2 घंटा था मेरा, 1.5 आवर उसने में। आफ्टर रिवीजन भी मेरा और 15-20 मिनट बाकी था, और मैं टाइम ले लेके कुछ कुछ डर डर के कंफ्यूज कर करके इधर उधर करके 10-20 गलती कर दी, 18। Sir, वो timer creates pressure ना on you कि you have limit. Yeah. लेकिन ये है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे रेस्ट ऑल एंट्रेंसेस। अगर Yes. नेगेटिव मार्किंग है, कुछ चीजें पता है भी तो विल स्केयर टू चूज, इसमें वो चीजें नहीं, जस्ट अटेंड करके जाएंगे। लेकिन हाँ, इस साल क्या रूल है वी डोंट नो, बिकॉज वाईसी भी ऑल्सो टफनेस बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो जितना जल्दी अटेंड कर लो बेस्ट है, एटलीस्ट you'll get 5 years फर्स्ट L2, और उसके बाद L3 यू कैन पुट इट फॉर नेक्स्ट ईयर। क्यों? 5 साल वैलिड अगर वो रहेगा, ये एक्सपायर होगा भी तो चलेगा। सो वन you'll get it वैलिड फॉर 2031, और एक 27 में करेंगे तो 2032 तक वैलिड रहेगा। और जितना एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर करके उसको पढ़ के जाएंगे, उससे ही आपका प्रैक्टिकल निकल जाएगा। थियोरिकली यू हैव टू वर्क, थियोरिकली तो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन बहुत बढ़िया चीज थियोरी में मुझे जो ट्रिक लगा, किसी भी चीज का काउंटर पोजीशन वो लोग पूछेंगे, शशांक आसन में आ जाना, तो इट इज ऑलमोस्ट वैलिड फॉर मोस्ट ऑफ दी थिंग। अगर वो भी समझ में नहीं आ Yes, रहा, sir. शवासन में लेट जाओ, तो सुपर सेट ऑफ ऑल द पोजीशंस, काउंटर पोजीशन का वो है। फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो लेफ्ट, इसका ये वो काउंटर। जैसे एक मंत्र का उच्चारण तो पक्का है, तो हमारे पास जितना मंत्र है उसका पढ़ लेंगे, उसका सोर्स पढ़ लेंगे, उसका मीनिंग थोड़ा सेंट्रल आइडिया पता होगा, उतना बोल देना। जो चांट कर रहे हैं उसका बोल देना। सूर्य नमस्कार सॉलिड मार्किंग, 12 मंत्र सही से कर लेना, आसन 7, और ईच में ब्रीदिंग टेक्निक क्या है, अगर एक बार के लिए कौन कौन सा चक्र का इन्वॉल्वमेंट है देख लेना। तो जैसे भुजंग आसन का आज्ञा चक्र का इन्वॉल्वमेंट, राइट? वैसे ये पूछ सकते हैं आपका सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम में पक्का एक आएगा, तो आपको कुछ एक करके दिखाने के लिए बोलेंगे, बाद में पूछेंगे कि व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड इंडिकेशन। तो थोड़ा संस्कृत नेम याद रखें, हो जाएगा। संस्कृत नाम यू कैन रिमेम्बर, बार बार अभी से पढ़ेंगे तो 3-4 महीने के बाद वो कॉमन टर्म हो जाएगा ब्रेन को। ठीक है, चलिए शांति पाठ करके क्लोज करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। हरि ओम। चलिए फिर आज के लिए इतने में क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. बाय Bye, बाय। everyone. Bye.